Hello everyone, I am your host for the day, and today with us I am having Atul Pal, and today we'll be discussing more about the designer series, and the series name is YOUNGINERS, basically young plus designers. And today with us I am having Atul Pal as a speaker, and who is currently working as a designer at Cognizant. So let's just start with the basic introduction of Atul and moving forward with his journey. So hello, Atul, welcome to the channel. Please introduce yourself to our audience. Thank you so much, Christy, for allowing me this opportunity to introduce myself on your platform. It would be a Pleasure. great opportunity for me as well to express my interest and experience with the among aspiring designers. Yeah. So So yeah, to the audience, what you actually do and how's your journey going on? yeah, I can say my journey is completely different as per the current designers. They are transitioning into UX or UI world. I never wanted to be a designer at first. It's not Okay. my kind of thing. Earlier, I used to think I was completely from a commerce background, actually. My brother was doing a course from arena animation around 5 to 6 years back. So it is said that when no one is in your family or in your nearby to guide you, so you are not very much clear that what you wanted to pursue in your career. I Yes, was in that's dilemma. Yeah, yeah, that's a I was complete different story. I was also in dilemma that what should I do? Even though I was good in study, but not very much clear that these particular things I wanted to do pursue in my career. Okay. So my brother forced me to join Arena Animation for the course Mhm. of print and publishing. And I just took 3 to 4 classes, barely, not more than four, and Okay. I quit. I quit. Okay. And they were saying the management of the arena manager, we know won't gonna refund your course fees. Mhm. I submitted complete course fees in one time payment in one shot. Okay. But I said had a word with my family that it's okay to for loss of our money, but I don't want to lose my time as well. Because Mhm. even if I complete the course, I'm not gonna do anything in this field. Right. That was around a 5 years back story. Okay. So what Means you what you all learned in that course and how it helped you in your design journey? I that time I actually left the course 5 years back. I just took 3 to 4 classes. But Okay. again, around 1 year back, my when my brother starts to working in a company as an UI designer, then I used to think it's like kind of completely different thing what I used to be learning arena animation. Means we were pursuing a course of graphic designing. Right. Graphic designing is completely different as compared to the user interface or user experience, right? So that things started to getting me influenced that this can be my kind of thing, means solving a problem. I always love to do solving a kind of problem, if what kind of problem users are facing. Okay. So that's where I started influenced by my brother, elder brother. He is currently a designer at Deloitte. Okay, that's great. Like you got your brother as your inspiration and you started your journey. But why you Yeah. UI UX as a career? Like why you wanted to grow yourself in UI UX only and why not in other fields like graphic or motion designing? Why not? In graphic means when I joined the course, I had no interest in graphic designing. So I Okay. completely left the course. But when I get the information about UI or UX, how these things work and how this community help to the people for making a better world, Okay. then I gave myself around 3 to 4 months to learn the software, understand the knowledge or information about UI or UX. I even done some courses from Udemy Mhm. to get myself into the field of designing, because without having a degree, professional degree of design, even not from Right. a technical background, would be a very challenging task for the upcoming designers. Right. Even I had faced a lot of challenges to get Okay. to my first job. Like can you tell us what challenges you faced in your journey and how you overcome them? Yeah, when I used to means give interview, even no one wants fresher in this time, because Right. they have to spend 3 to 6 months for yourself. Means if a company going to hire me,
they have to spend 3 to 6 months, because I'm not going to produce any result for them for the period of 3 months. That would be my learning phase, obviously. Okay. So I was not good in networking that time, which is very important for any professional people. Right. So I was not even getting a chance to give an interview in any firm. Getting an interview chance is also a task. Then only we can express our interest, our enthusiasm, that how we can help to solve your problem. Right. And even I hadn't a good portfolio that time. I just made couple of 3 to 4 shots on dribble. On the basis of that, I used to give interview, and was not very much aware about the case studies. So having a case study always questions of interviewer that are you good enough to solve problem or not, because you have just couple of shots in your portfolio. Right. That we can assume that you have a good UI experience with. So I got the job on the basis of user interface. They hired me as a UI designer trainee. Okay. My first job was UI designer trainee. Okay. Like, so tell us the brief about your journey, like from your first company to Cognizant, how you landed from your first company to Cognizant, and yeah. Yeah, actually that was my first job. I joined there as a UI designer trainee. I was not very much aware with how these things work at a professional level. Okay. So when I joined as a UI designer trainee, my roles and responsibilities in that company was, they just simply gave me a brief on Google Doc format or Word format, and we just need to convert those problem statement of the clients into design. Means we didn't do research part or the wireframing and all. They Okay. just want their deliverables as much as quick as possible. Okay. So I was purely into UI for the period of 6 months. But when I completed 6 months, I used to think that this is not completely what a user interface designer can do. Exactly. Means UI is not limited to make a good looking designs only. You should be very clear with others factor as well. You should be very familiar with the grid system, color hierarchy, font. I just was not very much aware that time. So I used to think that this job is, I have done what I need to learn from this company. I started giving interviews in next companies. I used to Okay. target a good companies where I can learn other things as well. What means designers can actually do their specific roles. So what do you actually see in a company, like when you apply for a specific company, what is your motto behind ki, this is the company I have to apply? Like, what is there in your mind before applying to any company? I am looking for background, because the Okay. company I used to work in, that was into marketing and agency. Okay. So they didn't have that much of projects and all, which where we can learn lot of things about technologies. So I was looking for a company where I can learn technical programs as well. Means You how are, our, so you are more inclined towards MNC या फिर startup? no, ऐसा कोई मतलब कोई वो नहीं था कि मुझको स्पेसिफिक एमएनसी ज्वाइन करना है या स्टार्टअप. I was looking for a good company where I can build myself as well as my career opportunities. Okay. So the day when I started giving interviews after my first job, I had almost 3 offers in my hand. Okay, that's great. After careful consideration, I decided to join Accubits Technologies, because Accubits Technologies deals with artificial intelligence, machine learning, robotic automation. So I thought this would be a better opportunity for me to learn and grow as well. And even in the period of 11 months I worked there, I learned worked many projects on cryptocurrencies, NFTs, even AI. That's great. So like, And even that, according to कि you have to incline towards more technical based company जहाँ आप technical skills के बारे में भी सीख सको, जैसे कि you learned in this company about AI and other skills. हाँ, मतलब मेरा
पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा इन्हीं तरफ प्रोजेक्ट्स की तरफ है जो टेक्निकल में डील करती हूँ, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज वहाँ यूजेस होती है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज के राइट। प्रोजेक्ट्स हो गए और हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो गए, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें मतलब यूआई भी और यूएक्स भी काफ़ी सोच के करना पड़ता है, मीन्स दैट कैन बी टेक्निकल फिजिबल और नॉट, राइट। यूजिबिलिटी काफ़ी उसमें मेजर रोल प्ले करती है। या सो फिनटेक इज काफी बूमिंग आजकल वैसे ही, तो वी हैव टू ग्रो इन टेक फील्ड बिकॉज इट्स द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. राइट राइट। Yeah. So, like, how you landed in Cognizant, like, share some insights for our aspiring designers so that they can also apply for the same. Actually, I had no plans to change my job in Accurate Technologies because Okay. the day I joined, I thought here I am going to spend my next 3 to 4 years. Okay. But when I left my first job, I pinged the design director of Cognizant that time that I am ready to give you an interview if you are looking for a person who is Okay. having fresher or 3 to 6 months experience. But that time he said, we are not looking for fresher Atul, but we are keeping a profile for the future. So after almost 1 year, he pinged me again, if you are looking for an opportunity, Okay. so you can apply. So I thought, let's see. अप्लाई करने में तो ऐसा कुछ जाता नहीं है, मैंने Exactly. सोचा काफी टाइम भी हो गया है, अपने आप को भी चेक कर लिया जाएगा इंटरव्यू देके कि किस टाइप के क्वेश्चंस अभी पूछते हैं इंटरव्यू, एंड दैट इंटरव्यू आल्सो हेल्प्स अस टू फेस अवर ओवरकम। बहुत लोगों को मतलब होता है इंटरव्यू देने में भी Like प्रॉब्लम, the इवन fear of मुझको भी interview, होती है। basically. राइट। Yeah. सो आई said okay, I am ready to give an interview. And everything goes well. They took around 4 to 5 rounds, to be honest, before selecting the final call. Okay. Even they had one problem with my profile, because in my profile there were no any case studies. Yeah, right. You told that. Yeah, as I mentioned, मेरे पास कोई केस स्टडी नहीं है, इवन अभी भी मेरी प्रोफाइल पोर्टफोलियोज में कोई केस स्टडी नहीं है. बट when I worked in Accurate Technology, so I learned how these process works. मीन्स Okay. कैसे प्रोजेक्ट्स आता है और कैसे अप्रोच की जाती है. तो मैंने उनको अपना थॉट प्रोसेस समझाया कि किसी भी प्रोजेक्ट में मेरा रोल क्या होता है. Okay. आप ऐसे कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते इंटरव्यू के साथ. If you are into particular this responsibilities handling in a particular project, so just explain them your roles and responsibilities. Okay. So जिस भी प्रोजेक्ट में जो भी मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मैंने उनको बताई, क्योंकि ऐसे तो हम अपने प्रोजेक्ट शेयर नहीं कर सकते, कंपनीज के साथ एनडीए साइन होता है. Absolutely. So, like, you तो can crack Cognizant without even like having one case study in your hand. So that's being a designer. या एक्चुअली फर्स्ट राउंड काफी अच्छा और काफी बड़ा रहा था. इवन दे टुक मोर देन 1 hour इन फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड. तो उन्होंने एज यूजुअल हर कोई पूछता है ऐसी कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट जिसमें वो आपको लगता हो बैड हो एक्सपीरियंस या कुछ उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो. तो मैंने पर्सनली कहा मुझको पेटीएम का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं लगता. Okay. तो जैसे ही मैंने कहा पेटीएम, सो दे वर वेरी सीनियर टू मी. दे सेड पेटीएम इज अ वेरी लार्ज प्लेटफॉर्म, Right. कि they are dealing with multiple users, millions of users they are handling on their platform. How Right. can you say that Paytm is not good, having a good UX or UI? I said हाँ मतलब है अच्छा, बट ऐसा लगता है काफी मैसिव है. कंटेंट जो है पहली स्क्रीन पे काफी सारा है जो यूजर्स को कंफ्यूज कर सकता है. मैंने मतलब पेटीएम की काफी ब्लॉग्स पढ़े थे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं यूजर्स. तो उन्होंने कहा चलो तो हम आपको फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही देंगे कि आप फर्स्ट होम पेज जो है पेटीएम का कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और इको फ्रेंडली बना सकते हैं यूजर्स के लिए. Okay. एंड दे अलाउड मी 1 or 2 days मैक्स. फिर मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हम हर प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करते थे उसको फॉलो किया विद इन 24 hours एंड आई मेड 1 screen Okay. विद एक्सप्लेनेशन एंड ऑल. उसके बाद एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच आई कांट डिस्क्लोज, Okay. the Yeah. company has
हम्म, फिर उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे, 4 to 5 स्क्रीन के डिलीवरेबल्स थी, वायर फ्रेम इंक्लूड्स थे, रिसर्च, everything, and they have given me around 3 days, maximum 3. okay. So you designed the whole application, जो भी वो problem थी. Yeah. Okay. And उनके basis पे you got selected. Yeah, there were other rounds as well. नहीं, जैसे मतलब सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, मैंने उस पर वर्क किया, फिर उसको मैंने कैसे प्रेजेंट किया, उस बेसिस पे आई गॉट जॉब. Okay. Great. मतलब ऐसे भी होता है, मान लीजिए मुझको किसी कंपनी ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, राइट, हम्म, अब मैंने किसी की हेल्प लेके कर दिया उसको, एंड एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे स्क्रीन कैसे वर्क करेगी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. वहाँ इवन कंपनी द को करंट समझ. डिजाइनर्स, even current designers, before doing anything they just ask for help to senior designers or their mentor, so they can get their self into UI or Right. UX. Right. डायरेक्टली ही हेल्प के पास जाना मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज नहीं है. पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से कितना भी हो सकता है खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज you will have to face a lot of trouble in your future for Absolutely. solving the problem. Yeah. So like when you started your journey, what were the mistakes you did in your initial phase, which you feel like कि जो नए designers आए वो ना करें? मैं तो कह सकता हूँ, तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माय इनिशियल फेज. इवन केस स्टडीज कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक, बिकॉज केस स्टडी ही आपका पूरा थॉट प्रोसेस दर्शाती है कि Right. आप किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रोच करने के लिए क्या आपकी फर्स्ट स्टेप रहती है. तो आई एम प्लानिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज, Right. and I was not very aware with the design system, color hierarchy, typography. मीन्स मुझको कोई आइडिया नहीं था इनिशियल फेज में कि क्या कंटेनर एरिया होता है एक स्पेसिफिक स्क्रीन का, कि हम उसके अंदर ही अपने कंटेंट्स को बना सकते हैं. मैं कहीं भी कुछ भी बना देता था फॉर जस्ट मेकिंग अ गुड यूआई. मुझको कुछ नहीं पता था कि इतना स्पेसिफिक एरिया होम इंडिकेटर का है, इतना टॉप नेविगेशन का है, इतना बॉटम नेविगेशन का है, लेफ्ट Right. और राइट साइड मार्जिन स्पेसिफिक इतना होना चाहिए, टाइपोग्राफी के संग एक हायरार्की होनी चाहिए कि स्पेसिफिक हेडलाइन अगर हमने इस स्क्रीन में ये यूज की है तो वो एंटायर डिजाइन में वही फॉलो करनी होगी. Okay. आई So वाज नॉट गुड इनफ दैट टाइम. what resources you follow to learn about these things like container areas and typography? मैं मतलब कह सकता हूँ मैं इतने रिसोर्सेज से तो कुछ नहीं सीखा, मैं अपनी कलीग से, अपने मेंटोर से, अपने सराउंडिंग से ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है एज Okay. कम्पेयर टू द रिसोर्सेज. Right. तो हर जॉब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं होता कि आपकी जॉब में कुछ भी नहीं है सीखने को. ऐसे तो कोई जॉब नहीं है जिसमें कुछ ना हो सीखने को. Absolutely. Like you work in a physical office, तो काफी लोगों से मिलते हैं, तो we learn on daily basis कि कहाँ कहाँ mistakes कर रहे हैं. Right. Even when you had enough experience in your company or you are familiar with your designers or your colleagues, तो आप उनके डिजाइन को देखते ही बता दोगे कि ये स्पेसिफिक डिजाइन इस बंदे ने बनाया. दैट Okay. इज योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स विच आई हैव लर्न इन माय फर्स्ट जॉब. Okay. मतलब वहाँ हम लोग मोस्टली वर्क करते थे यूआई पार्ट पे, तो वी वर टीम ऑफ अराउंड 20 to 25 डिजाइनर्स. Okay. इन जस्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ मैं किसी का भी डिजाइन देख के बता सकता था कि ये डिजाइन स्पेसिफिक इस पर्सन ने बनाया है. Hmm. सबके पास एक अपनी अलग स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी होती है, एक यूनिकनेस होती है Right. जो उनके डिजाइन में दिखती है. Absolutely. So we get to know like obviously 6 months का period काफी होता है जिसमें we get to know each other, तो हमें पता चल जाता है कि उसने कौन सा डिजाइन बनाया. हाँ, Cool. ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरी काफी इंप्रूव हुई थी फर्स्ट जॉब में, क्योंकि Okay. हम यूआई पार्ट पे ज्यादा वर्क करते थे. Also, as you mentioned, like networking बहुत जरूरी होती है. Like अगर हम initial phase से network करें तो हमारे लिए काफी help करेगा in applying jobs and internships के लिए. नेटवर्किंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट द करंट डिजाइनर्स आर फेसिंग. इवन they used to message people like I am in dilemma, I am having depression, but वो उससे ओवरकम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे. हाँ, भाई right. नेटवर्क कनेक्ट करो, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कनेक्शन बिल्ड करो अपने,
नेटवर्थी कनेक्शंस होने चाहिए। ऐसे नहीं आप किसी से भी कनेक्ट हो जा रहे हैं जो आपके बैकग्राउंड से रिलेट कर ही नहीं रहे। एग्जैक्टली, मोस्ट और ऑफ। जितने हो सके किसी भी एक या दो मेंटर को फॉलो करो, बिकॉज आप 10 लोगों से एडवाइस मांगोगे, 10 के 10 अलग अलग एडवाइस देंगे आपको। फिर आप एब्सोल्युटली। कंफ्यूज हो जाओगे कि यार उसने तो मुझको ऐसे बताया था, इसने ऐसे बताया। हो सकता है वो अपने एक्सपीरियंस से आपको सही बता रहा हो। तो फॉलोइंग अ लॉट ऑफ मेंटर कैन बी अ कॉज फॉर करंट डिजाइनर्स आल्सो। आई फील लाइक वी शुड लाइक लुक फॉर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो हमारे जितना हो एंड सेम उसमें हो, ताकि ना एक वाइब मैच कर सकती है एंड वी बोथ कैन वर्क टुगेदर। सो वो काफी एरियाज को मतलब एक तरीके से बेटर वे में निकाल सकता है हमारा बीइंग अ डिजाइनर। या मैं कह सकता हूँ, जबकि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस था जब मैं एक्टिविट्स टेक्नोलॉजीज में था, बट मेरे कनेक्शंस काफ़ी अच्छे थे लिंक्डइन पे, ओवर 5000 प्लस कनेक्शन। और ओके। किस उसमें भी काफ़ी क्लोज कनेक्शन थे जो कि कंपनीज में वर्क कर रहे थे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गई, डिलॉयट हो गई, ईवाई हो गई। तो राइट। उनसे मेरा इतना अच्छा कनेक्शन था, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलती थी तो मुझको पिंग कर भी देते थे कि राइट। अतुल, इफ यू वाना अप्लाई फॉर इन माय कंपनी, we have a एग्जैक्टली। specific role. Yeah, this is how network works actually because we know these people and वो हमें बता देते हैं कि specific company में job role है, if you are interested you can apply. So I guess yeah, networking is really good. मैंने मतलब टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर माय सेकंड जॉब एक्टिविस्ट टेक्नोलॉजी, मैंने फ्रंट से कभी किसी कंपनी में अप्लाई नहीं करा। मेरा मतलब कोई ऐसा रोल वो नहीं था, गोल कि मेरे को जॉब चेंज करनी है। बट Right. जब खुद से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मेरे को पिंग करने लगी, नॉक करने लगी मेरा ही डोर, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखती हूँ। Absolutely, like if वो खुद ही आ रही है तो why not try? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, you will not get selected. So that's important. विल Yeah, नॉट at गेट least you have सिलेक्टेड। tried. हमको हमारी प्रॉब्लम पता लगेगी, मतलब हम कहाँ Hmm. लैग कर रहे हैं, बाय गिविंग एन इंटरव्यू। Right. फियर भी उससे इम्प्रूव होता है काफी। जितने ज्यादा आप इंटरव्यू दोगे उतना ज्यादा आप ओवरकम आओगे अपने फियर से। Absolutely. Perfect. Like इवन yeah, yeah, go on. इवन इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय design or my skills or my communication in English. So I thought that English could be a cause for me in upcoming years. So I started taking an English speaking classes Okay. because मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी अभी भी नहीं है। Hmm. बट जैसे ही मुझको पता लगा कि हमको क्लाइंट से डील भी करनी पड़ती है इसमें, Right, right. क्लाइंट कहीं के भी हो सकते हैं आउटसाइड इंडिया। सो अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, इफ यू डोंट हैव स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है एक्चुअली, Right. वो आप ऐसे जल्दी से नहीं सीख सकते। Hmm. इवन इफ यू आर अ वेरी गुड डिजाइनर, यू शुड बी वेरी clear how you gonna present your design in front of clients or in front of stakeholders. That makes a Absolutely. lot of impact. Right. वही आपका उस कंपनी में सब कुछ डिसाइड करेगा, आपका अप्रेजल, आपका इंक्रीमेंट, आपका परफॉर्मेंस हाइक, सब कुछ वहीं से। Exactly. The way you represent yourself, the way you represent your company, your design, this is how you will succeed in a specific company. इवन मेरे नोन में कुछ डिजाइनर्स है, दे आर हैविंग 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे आर वेरी गुड विद देयर वर्क, बट दे डोंट हैव प्रेजेंटिंग स्किल्स। वो अपना डिजाइन मतलब खुद से नहीं प्रेजेंट कर पाते क्लाइंट को। सो दे Okay. ऑलवेज नीड अ पर्सन विद इन अ कंपनी, हाँ, उसके बिहाफ पे वो पर्सन उस डिजाइन को represent. क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करता है। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका किया हुआ वर्क आप खुद से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे क्लाइंट को, So client को आप सेकंड सेकंड पर्सन हो गए। अब मैं जैसे अगर मैं किसी के लिए अपना किसी और का डिजाइन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्लाइंट को क्या लगेगा, मैंने ही उस पर मोस्टली वर्क किया है। right. वो पर्सन समटाइम्स कॉल पे होता है, कॉल पे नहीं भी होता है। Exactly. अगर आपने कुछ वर्क किया है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे एक्सप्लेन करना है। Exactly. Like why to like depend on another person? आप उसको opportunity दे रहे हो instead of like getting yourself an opportunity. Yeah, in my Acuvus technologies, even I used to be in a client call for the period of 3 to 4 months just to understand that how my seniors is was going to present the design in front of client. तो Okay. मुझको वो उस कॉल में इसलिए रखते थे ताकि मैं सीखूं कि सीखो, right. डिजाइन को प्रेजेंट कैसे करते हैं।
क्योंकि Absolutely. जब हम डिजाइन प्रेजेंट कर रहे हैं आफ्टर डिलीवरेबल्स, मींस आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क गिवन बाय क्लाइंट, तो क्लाइंट के क्वेश्चंस भी आएंगे, हाउ यू आर गोना टैकल दीज ऑल आर लर्निंग फेज. Perfect. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द कंपनी कि उन्होंने मुझको क्लाइंट कॉल में रखा फॉर द पीरियड ऑफ Exactly. स्टार्टिंग 3 to 4 months जस्ट टू लर्न. Yeah, like इट आपने वाज से काफी कुछ सीखा. Now you'll apply these skills in your like upcoming companies. So that's all the process goes like. Perfect. Now we are like moving to the end of the conversation. Like, what tips you suggest for like upcoming designers to follow so that they can be succeed in their career? my advice, I'm not sure because I am also a newbie in this field. I have just less Yes, than yes. 1.5 years of Like, experience. what tips I, you can suggest, or probably what advice you can suggest? most of them I can say are confused or just influenced by the term UI UX. Okay. कि कहीं से सुन लेते हैं UI UX और इनको लगता है ये फील्ड मेरे लिए है, मैं भी ये करना चाहता हूँ. But this UI UX is a very challenging field. It's not like a couple of days that anyone can do by just learn कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है. और Exactly. कुछ तो ऐसे हैं जो एज एन यूआई डिजाइनर वर्क कर रहे हैं और दे थिंक नहीं नहीं मुझको यूएक्स में जाना है. बहुत से मेरे पास ऐसे कॉन्टेक्ट हैं और ऐसे मैसेजेस आते हैं. दे कॉल मी सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ मुझे Yeah. सर बोलने की कोई जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट 23. तो कहते हैं सर आई एम वर्किंग इन माय कंपनी एज एन यूआई डिजाइनर फॉर द पीरियड ऑफ 2 years बट नाउ आई वांट टू स्विच एज इन माय करियर इन यूएक्स. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप यूआई डिजाइनर हो आप अपना यूएक्स नहीं इम्प्रूव कर सकते उसी रोल में. Right. Like, इवन if they are working in a specific job, so like obviously they can switch as well, but obviously उसके लिए efforts लगते हैं काफी. It's not mere only about salary perks. UX designer की salary perks अच्छे हैं तो we can switch. इवन हेड ऑफ डिजाइन है क्रेडिट की, उन्होंने एक पोस्ट भी किया था दैट विजुअल डिजाइनर और यूआई डिजाइनर आर आल्सो यूएक्स डिजाइनर्स. Right. अगर आप यूआई डिजाइनर हो तब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग योर प्रोजेक्ट. उसको अच्छे से समझो, पूरे प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करो. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और एनी hard ability, you can just tell them your colleague who has worked in that project as an UX designer. Right. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप UI डिजाइनर हो आपका UX नहीं इम्प्रूव हो सकता उस रोल में. Absolutely. Perfect. I guess Atul, it's like lovely talking to you and like representing your journey as a designer, as a young designer. It's a great opportunity for me as well. So let's just end this session by stating your quote for your life, like what quote you live for and what you can even tell our audience as well. My quote for the life of a profession is don't be serious in your life. Right. Be sincere always. Means बहुत से ऐसे हैं एस्पिरिंग डिजाइनर जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है अपने करियर को लेके. बहुत ज्यादा मतलब उनको डिप्रेशन होने लगता है अगर उनको चांसेस नहीं मिलते और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. जस्ट बी सिंसियर विद योर वर्क, विद योर रूटीन. अगर एक दिन मिस भी हो जाता है तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. Exactly. You have So to always make a short term goals. like keep putting efforts consistently and eventually result will like come up जब उसको आना होगा. You just have to put efforts. बिल्कुल. मैं मतलब कभी कभी वीकेंड्स पे अपना 100% वर्क के ही लिए निकाल के रखता हूँ कि सैटरडे मुझे आज इतना सारा काम करना है, और किसी किसी वीकेंड में बिल्कुल भी अपना लैपटॉप और अपनी मशीन कुछ टच नहीं करता. Same happens with me. Like, why to burden yourself because it's a short life. You also have to enjoy your life. हर वक्त काम नहीं कर सकते. आपका मतलब जितना माइंड फ्रेश होगा आप उतने अच्छे से ही अगले दिन या उसके अगले दिन अपना आउटपुट और अच्छा दे पाओ. Absolutely. You need to be very relaxed. Your mind should be very relaxed. You work in a better way and उसके बाद you'll work freshly next day. Even companies are providing work from anywhere policy. That's a good for us, so we can work from anywhere. Yeah. To freshen up our mood, mind, so we can come up with better ideas. Right. Means designers के साथ तो ऐसा ही होता है, अगर आप कहीं भी stuck हो गए हो, just go for a walk, just give yourself 10 minutes 15 minutes
अगर आप वहीं पे बार बार ट्राई कर रहे हो कि सॉल्व कर सकता हूँ मैं प्रॉब्लम, माइंड एक जगह आके ना स्टक हो जाता है। राइट। हम कितना भी सोचे कि कोई और वे होगा, बट उतनी जल्दी हमारे पास नेक्स्ट आइडिया नहीं आएगा। तो नहीं आपको आता लाइक। पूरा उस टाइम रिलैक्स होना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा अपना मशीन, या तो बुक पढ़ो, कुछ भी ऐसी अदर एक्टिविटी करो जिससे आप अपने माइंड को फुल्ली रिलैक्स कर सको। एग्जैक्ट। Perfect. It was like a very positive thought and positive conversation with you, Atul. And thank you so much for your time and giving your insights from your journey to our audience. Hopefully, they'll get insights and they'll definitely imply them in their lives. Thank you so much थैंक यू सो मच। for me, Atul. थैंक यू सो मच Sestimago for giving me this opportunity to introduce myself or express myself, how my journey has started and all. Yeah, That would it's be my pleasure. really helpful for upcoming designers. Even you are not from a technical background or not having a professional degree, still you can get a job in Right, top MNCs or giant MNCs. right.